दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब है क्योंकि तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब है और आज हमारा आखिरी दिन है। जो अभी जो जजमेंट का सेगमेंट चल रहा था, इस सेगमेंट का आज डे 17 है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम इस 17 दिन में आपको 170 केस प्रोवाइड करेंगे। हमारे वादे के अनुसार आज हम आपको 170 केस प्रोवाइड कर देंगे। आज ख़त्म हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आखिरी दिन डे 17 है, तो चलिए। 160 लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल, ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द कंसेंट ऑफ फैमिली नॉट नीडेड once two adults decided to marry. Case number 161 Devilal versus State of Madhya Pradesh. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस EU लालित, ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा Banarjee and ऑनरेबल जस्टिस K.M Joseph. In this case, the Supreme Court held that juvenile offender under 18 years and above 16 years to be remitted to Jurisdictional Juvenile Justice Boards. Case number 162 The Chief Election Commissioner of India versus M.R Vijay Bhasker. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस G.Y. chandrachud, ऑनरेबल जस्टिस M.R Shah. In this case, the Supreme Court held that freedom of speech and expression also extends to reporting the proceeding that happen in courts, including oral observation made by the judges. Case number 163 सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस N.V. रमन, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस. In this case, the Supreme Court held that Section 304B of IPC must be interpreted keeping in mind the legislative intent to curb the social evil of bride burning and dowry demand. The bench therefore laid down guidelines for dowry death trials in lower courts. Case number 164 राहुल शर्मा वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस N.V. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस. In this case, the Supreme Court held that if deceased was self-employed and below the age of 14 years, 40% additional would be made to their income as future prospects. Case number 165 Jayamma versus State of Karnatak. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस N.V. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस. In this case, the Supreme Court held that dying declarations are admissible in evidence on the principle of necessity, as there is little hope of the maker surviving. Case number 166 Mohammad Salimullah versus Union of India. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस S.A. बोबड़े, ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपाना, ऑनरेबल जस्टिस V. Ramasubramanian. In this case, the Supreme Court held that right not to be deported is concomitant to Article 19 and available only to Indian citizens. Case number 167 फरजाना बाटोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस D.Y. chandrachud, ऑनरेबल जस्टिस M.R Shah. In this case, the court held that though the right to pursue higher education has not been spelled out as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. Case number 168 विकास किशन राव गोयली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इस केस के जो जज थे ऑनरेबल जस्टिस M. खानवालीकर, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी. In this case, the Supreme Court held OBC reservation cannot exceed 50%. Case number 169 Gurudatta Pathak versus State of Uttar Pradesh. In this case, the Supreme Court upheld Allahabad High Court observation that not examination of independent witness not fatal to prosecution. Case number 170 और
आखिरी केस ये है कि केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत and Honorable Justice A.S. Bopana. In this case, the Supreme Court held that fundamental right to life unconditionally embraces even on under trial. तो ये था आज के केस के बारे में, और हमारा जो जजमेंट का जो सेगमेंट चल रहा था, जो स्पेशल सीरीज चल रहा था, और ये आज का आखिरी दिन था और ये ख़त्म हो गया। हमने आपको 170 केसेस प्रोवाइड कर दिए। तो अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं ऐसे और कुछ नया स्पेशल सीरीज के साथ, तब तक बाय।